Okay, everything looking good, I guess. Yeah. Where do you keep my key? Ouch. मेरे इंटरनेट को आई थिंक प्रॉब्लम है आज कुछ। स्ट्रीम तो ठीक चल रही है। Maybe. गाना चाहिए। यार आई हैव नो आइडिया व्हाट टू प्ले एक्चुअली। मतलब सोच के तो आया था क्या खेलूंगा, बट अकेले कुछ खेलने का मन नहीं कर रहा। क्या करें? आओ। अबे यार बाल बड़े बाल होना भी ना वेरी हार्ड टू टेक केयर ऑफ देम। मेरे को 3 या 4 घंटे लगते हैं सिर्फ बाल सेट करने में। 3 नहीं, 3 ज्यादा हो गए, 2 एक्चुअली। धोना, कंडीशन करना, ड्रायर मारना, स्ट्रेट करना। स्ट्रेट नहीं करो तो ऐसे दिखते हैं। Fuck. Give me a sec. Fourth April 2017. I think I'm gonna play What Remains of Edith Finch today. Most probably. It's a emotional solo game. क्योंकि साथ खेलने वाले तो डोटा खेल रहे हैं और डोटा मैंने खाई नहीं। Let's see. Bandot. I wish I could. I wish I could. Ouch! Game sound बहुत ज़्यादा है।
मेन्यू प्लीज। फक, ओह गॉड। अबे होगी कान की बहन। That's too fucking loud. स्टार्ट करें या थोड़ा वेट कर, 10 मिनट बात करते हैं फिर करते हैं। इनका पता नहीं कब तक चलना डोटा। बाय द वे किसी को अगर रॉकेट लीग ट्राई करनी है तो फोन पे भी आई हुई है, रॉकेट लीग साइडवेज समथिंग कुछ ऐसे नाम से, एंड्रॉइड और उस पे है, आईओएस पे आई थिंक। एंड्रॉइड पे तो है इतना आई एम श्योर, आईओएस का पता नहीं मुझे। पीसी मोबाइल वाला एक साथ नहीं, साथ नहीं खेल सकते। कैसे खेलेंगे? जो मोबाइल वाली है साइड टू साइड 2D में, बट लुक्स गुड। मैंने मतलब कल ट्रेलर देखा था, मैंने सोचा था आज मैं डाउनलोड करके ट्राई करूंगा। दिखने में तो अच्छी है, अब खेलने में कंट्रोल्स कैसे होते हैं दैट आई एम नॉट श्योर, वो खेल के ही पता लगेगा। बट लाइक इट लुक्स गुड, इट लुक्स जेन्युइनली लुक्स लाइक रॉकेट लीग। गोल्स डिफरेंट है थोड़े, इट्स नॉट लाइक पीसी की तरह की दोनों गोल्स जो हैं वो ग्राउंड पे हैं। इसके गोल्स वैसे हैं जैसे अमेरिकन फुटबॉल में नहीं होते ऊपर दो साइड, इट्स लाइक दैट। 2 डायमेंशनल है बट अच्छे। क्लीन शेव। मैं नहीं रखता बियर्ड, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बियर्ड, मेरे को हेवी लगती है बियर्ड मेरे फेस पे। मेरे को इरिटेट करती है। देख, I'm okay like this, clean shaved and looking like a fucking kid, than having a beard and feeling like I'm 24. So, hello Vivek, कैसा है? Hi. बट बच्चे क्यूट होते हैं यार, बड़े चूती होते हैं। बड़ा होना ही नहीं है, बच्चा रहो बच्चा। आज भी मैंने स्ट्रीम थोड़ी अर्ली स्टार्ट की मैंने, बिकॉज आज पापा को लेने जाना, आज मैं पहले ही ले आया उनको। नहीं तो मैं वही 9 o'clock तक स्ट्रीम स्टार्ट करता, 10:30 तक स्ट्रीम करता, फिर सो जाता क्योंकि आई गेट एग्जॉस्टेड। आज देखते हैं, होपफुली थोड़ा लंबा स्ट्रीम करूंगा, बट खेलूंगा क्या, आई हैव नो आइडिया। किड्स आर फकिंग डम, डिपेंड्स, नॉट एवरी किड इज डम बट मोस्ट ऑफ देम आर, आई एग्री। अरे अडल्ट्स आर डम, किड्स की क्या बात है। फाइनली मेरी बहन आ चुकी है। आई एम गोना गेट अ हेयर कट टुमारो or day after tomorrow and it'll be better. I'm gonna get rid of my hair that comes on my ear on both sides and पीछे से जो कितने बालों का कलर फेड हो गया, I'm gonna get rid of them. बस आगे से कुछ नहीं कटवाना, आगे से I want them to be long. I'm gonna grow them longer. मैं मतलब यहाँ तक कम से कम लाऊंगा तो मेरा फेस इतना कवर करे, उसके बाद I'll get them completely straight. अभी मेरे वैसे ही खुद straight हैं, but वो straightener ज़्यादा मारना पड़ता है, then it gets completely straight. तो बेड के ऊपर वो आर्ट वर्क है। ओके, I'll tell you, जो posters हैं, these are posters gifted to me by my ex
एंड जो वो है दैट इज आर्ट वर्क दैट शी मेड एंड आई फ्रेम्ड इट एंड hung it on my wall just to give her confidence that she's good at it. Like we weren't together when I did that. हमारा breakup हो चुका था but I just wanted her to feel good, so मैंने उसको बोला just send it to me. I'll get it. I'll give you a surprise. उसने मेरे को भेजा. I got it printed and I got it framed and I got it hung on wall. उसके बाद she created a lot of other artworks. I think most probably 10 or 15. मेरे पास वो सारे पड़े हैं and I have to get them all printed and मेरे पास frame मेरे पास सारे हैं. I've bought all the frames, but I just have to hang them. And I'm gonna cover the whole wall. Like, uh, her name used to start from Z, so I'm gonna cover all of them in Z shape. Kind of a tribute to one of the person I've loved. New chat box, good. मैंने वो कर लिया ना, बैकग्राउंड हटा दिया सारा और मैंने फुल कर लिया इसको. धन्यवाद फॉर द प्लेलिस्ट. यू वेलकम. अरे वो मोन्टाज वाली प्लेलिस्ट ही है. मैं मतलब जो गाना मुझे लगता है दैट्स मोन्टाज मटेरियल आई जस्ट उस प्लेलिस्ट में डालता हूँ एंड माय प्लेलिस्ट कीप्स इंक्रीजिंग. अभी काफी देर हो गई है मेरे को मोन्टाज जैसे गाना नहीं मिला तो मैंने कोई डाला नहीं उसमें. मेरे को वो पोस्टर्स भी फ्रेम करवाने हैं. करवाऊंगा फ्रेम उनको. नो नोप, ये नाम नहीं था. मैं नाम लूंगा भी नहीं है. इट्स नॉट पोलाइट टू टेक नेम्स ऑफ पीपल दैट हैव लेफ्ट यू. चाहिए अच्छा मोन्टाज. अरे ब्रो, आई डोंट यूज हिंदी सॉन्ग्स फॉर मोन्टाजेस. मैं कभी कोई हिंदी सॉन्ग नहीं यूज करूंगा मोन्टाज के लिए. जी फॉर एक्सपीरियंस में तूने इंस्टेंट क्लिप्स रिकॉर्ड करने के लिए क्या सेटिंग रखी है? तेरे को बताया तो था. मेरी इंस्टेंट, रुक जा मैं बताता हूँ मेरा सेटिंग्स क्या है. मेरे को याद रखनी पड़ती है. ओह न्यू, ओके न्यू फीचर इमेज स्केलिंग. I'll do it. Ash going pro है ना, why not? Okay. हाँ मेरी सेटिंग है रेजोल्यूशन 1080p, फ्रेम 60, बिटरेट 50 और इंस्टेंट रिप्ले लेंथ 2 मिनट 30 सेकेंड्स, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली 900 MB की वीडियो बनती है. फिर 900 है. पहले 5-5 मिनट की वीडियोस कैप्चर करता था मैं, वो 3 या 4 GB की बनती थी. फिर साहिल को भेजना वाज यू नो टफ. तो अब 900 MB की बनती है. आई कैन सेंड लाइक व्हाट 10 to 20 और 30 वीडियोस एट अ टाइम, अगर उस मतलब लेंथ कम हो तो. बस फिर दैट्स गुड. चालू रहता है तो अरे G4 एक्सपीरियंस बिल्कुल FPS नहीं लेता, पता है. तो उसको बंद भी करेगा ना तुझे दिखेगा, कोई वो नहीं दिखेगा, कहते हैं डिफरेंस नहीं दिखेगा. उसका सेम है FPS, लाइक बिल्कुल लोड नहीं डालता कंप्यूटर पे वो. पर स्टिल अगर तुझे लगता है लोड डालता तो एक और सॉफ्टवेयर है आउटप्ले नाम का. वो तो एक्चुअली कोई लोड नहीं डालता. थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है बट इट्स गुड. वो बिल्कुल लोड नहीं डालता कंप्यूटर पे. बच्चे यही गलत होते हैं. नहीं करता है यूज सेम है ना. G4 हम चलेंगे भाई. 520F के डिफरेंस आ जाता. मेरे को तो नहीं लगता कोई, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगता. तो एक बार आउटप्ले यूज करके देख, अगर तेरे को लगता है कि इशू आ रहा है Gplay से, मतलब G4 से. आउटप्ले यूज कर, इट्स गुड. मैंने आउटप्ले यूज करके देखा.
क्या लगता है जीपीयू का प्राइस कब तक नॉर्मल होंगे? भाई आई डोंट गिव अ फक अबाउट जीपीयू प्राइसेस, क्योंकि मेरा कट चुका है। मैंने कब बिल्ड किया था? मैंने आई थिंक 2021 चला ना, आई थिंक मैंने 2019 में या 2018 में बिल्ड किया था। नहीं, 2019 में किया था आई थिंक। हाँ, एंड मैं फेब में सारा सिस्टम लेके आया। आई बॉट माई जीपीयू फॉर लाइक 70 और 72 समथिंग, एंड जून में उसका प्राइस 40 हो गया। लाइक फेब में लिया मैंने, जून में 40 भी कर दिया। भाई मेरे को जो दुख लगा था ना, आई वाज हर्ट। बुरा लगा भाई। कौन सा RTX 2070 सुपर, वो ट्रिपल फैन एडिशन RGB वाला मैंने, तभी मेरा महंगा पड़ा। आई थिंक ये कितना है, 65 समथिंग का था नॉर्मल वाला। तो मैंने ट्रिपल फैन लिया, RGB लिया, उसकी वजह से इट वेंट टू 70, अराउंड 70। कोई अंडररेटेड शोनन एनिमे रेकमेंड करना। अंडररेटेड शोनन एनिमे, पता नहीं यार, बहुत देर होगी मेरे को कोई अंडररेटेड एनिमे देखे हुए। मैं अभी तो वही डेडली सिंस देख रहा हूँ। कल मैंने वो भी देखा, डीमन स्लेयर के सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड, वो एंटरटेनमेंट आर्क वाला। अच्छा एपिसोड, और ज्यादा कुछ हुआ नहीं बट इट्स गुड। मेन आर्क शुरू हो गया, आई थिंक मेन आर्क है ये, क्योंकि मतलब म्यूगन ट्रेन वाला कुछ नहीं था इसमें, बस रेफरेंसेस थे। एंड स्टोरी उसके बाद की थी, जब वो फ्लेम हाशिरा मर जाता ना, उसके बाद की स्टोरी है। सो आई थिंक मेन आर्क है। एंटरटेनमेंट, इसका नाम ही वो है, कहते हैं डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। चीज देखनी थी मेरे को, वेट। ये ठीक है, ऐसे ठीक है ना चैट बॉक्स, या फिर चेंज करूं? आई थिंक थोड़ा और चेंज करता हूँ। वेट, मुझे 150, एक बार 300 गए थे, वो एक ही बार गए होंगे ना आई थिंक। टेक्स्ट साइज बड़ा, हाँ वही सोच रहा हूँ मैं, फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ थोड़ा। 30 ठीक है क्या? आई थिंक 30 इज गुड। अब चैट आएगी तो पता लगेगा। अदरवाइज आई एम नॉट श्योर। हाँ, i5 15 8 NVIDIA। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक है, बड़ा लग रहा, अच्छा लग रहा, लुक्स गुड। इसका लैपटॉप है ऐश का। ब्रॉन्ज सिल्वर अकाउंट है तो वैलो कॉम्प आ जा। महांश ब्रो, कितने बंदे हो तुम? मैं यूजुअली ऐसे, मैंने आज वैलो खेलना नहीं था, पर अगर तुम बुला रहे हो तो आ जाऊंगा। बंदे कितने हैं? क्योंकि अकाउंट तो है, अकाउंट तो डायमंड से लेके आयरन तक है। मैं अकेला हूँ। वैलो खेलूं क्या? मेरा वैलो का मन नहीं है आज वैसे, क्योंकि वैलो खेलना होता तो मैं इनको बुला मना ही लेता, डोटा बंद करा लेता इनका। बात करता हूँ, देखता हूँ। चल देख तू। माइन राइजन 5 ठीक है। तेरी SSD का है। इमेजिन डोटा इन 2021। अरे
मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता बट यार गेट इट। मैं मेरे ये जो पंटर लोग हैं ना, मेरे मेरे साथ जो खेलते हैं, मेरे दोस्त लोग जो हैं, इन सबको डोटा का नशा चढ़ा हुआ है। एसएसडी में सिर्फ 70 GB बचा है भाई। मेरे को पता नहीं कितनी चीजें डिलीट करनी पड़ी थी कल। मेरी हार्ड डिस्क फुल हो गई हुई थी 2 TB वाली। आयरन अकाउंट है तो वैलो आ जा। अब आयरन अकाउंट से वैलो आऊं? सिल्वर चलेगा? अब तो जा वैलो। अरे ऐसा नहीं, मेरा जेन्युइनली वैलो का मन नहीं है। डोटा मुझे समझ तो आई, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता खेलने का यार। मैं बोर हो जाता हूँ उस गेम में, लाइक सीरियसली। जो एक गेम है जिसमें बोला था अनरेटेड खेल लियो, लेकिन नहीं। अरे अगर मैं अनरेटेड भी खेलता और मैं अकाउंट भी अनलॉक करता तो रैंक वो ऊपर खुलता है। वो असर खत्म हो गया जी। असर खत्म? किस चीज का असर खत्म हो गया? पटेगा। असर तो पहले भी नहीं था दीक्षा। समझ गया जे जे तो समझ गया, समझ तो मैं भी गया हूँ। असर तो कभी भी नहीं था। व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट? लोग बदल जाते हैं, तू तो चुप रहा भूतनी के। आस्तीन का साम तो तू है साले। मैं भी हूँ पर तू भी है भाई। आज थोड़ी एनर्जी है क्योंकि आज मैं घर पहले गया, घर पहले आ गया। बट नहीं तो जॉब ने जो दिमाग खराब किया हुआ है ना, दिमाग नहीं, एग्जॉस्टिंग। पता है, ट्रैवल ट्रैवल करना वो मुश्किल है और कुछ नहीं। मेरे को पहले जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। ये तुम सही थे, +1 फॉर यू जे। देखो प्रूफ भी हो गया। हाई रैंक वालों के साथ खेलूं तो स्किल्स कम इम्प्रूव होंगी क्या भाई? सामने वाले, मैं देखो एक बात बताऊं, अपने से हाई रैंक वालों के साथ खेलेगा ना, मतलब ज्यादा हाई भी नहीं खेलना, बट अपने से मतलब थोड़े से हाई रैंक वालों के साथ खेलेगा ना, उससे तू इम्प्रूव करेगा। पता क्यों? क्योंकि तेरे को पता लगेगा कि गेम एक्चुअली चल कैसे रही है। लो रैंक पे खेलेगा, सेम रैंक पे खेलेगा तो मतलब भले तो कितने आगे बढ़ेगा, बट इम्प्रूव करना उसमें बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट होती है। अपने से हाई रैंक वालों के साथ खेलेगा तो तुझे पता लगेगा कि दैट क्या चल रहा है गेम में, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसे पीक लेनी है, कब पीक नहीं लेनी। मार खा के पता लगता है। पता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट। तेरा डिस्कॉर्ड आ रहा है, मेरे डिस्कॉर्ड पे मैं हूँ ही नहीं अभी। यार वैलो नहीं खेल रहा मैं अभी, अभी नहीं खेलूंगा मैं वैलो। मैं एडिथ फिंच खेलूंगा अब। मैं तेको ये बता रहा हूँ, रेनबो सिक्स जो है ना गेम, इट्स गुड बिकॉज उस गेम में तो मार खाएगा ना तो तू सीखेगा। खेला तो वो भी अनरेटेड, सामने वाले 200 लेवल के, वहाँ खेले 15 लेवल का। हाँ बाद में महांश, बाद में खेलते हैं यार वाला। अभी आज आज मन, अभी अभी तो बिल्कुल मन नहीं है। समझी मैं जे, लड़के ने दादी उड़ा दी, दादी आईडी उड़ा दी। समझ रहा है जे, समझ रहा है। +2 आश वालो खेल ही मत। नहीं खेलने दे वालो, इसमें लाइक कोई गलत बात नहीं है। लेट हिम ट्राई, लेट हिम हैव द टेस्ट ऑफ द पेन वी आर हैविंग। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये माई है वे गायब हो गए, इनसे पूछती है तो उल्लू के पट्टे हैं। अब बंद कर दिया इन्होंने। मास्टर के तो पेपर है, मास्टर को तो मैं बोलना ही नहीं चाहता कि खेल अभी। आई वांट हिम टू स्टडी। और भाई एसटीपी खेल लिया? हो गया भैंचोद डोटा। जस्ट चैटिंग और व्हाट? अरे अभी थोड़ी देर बात कर रहा हूँ, फिर ईडन फिंच स्टार्ट करूंगा ना। व्हाट मींस ऑफ ईडन फिंच? बंद कर दिया है अभी तो, डॉब एनिमेटर से। हाँ हो गया।
पिक्सर में जाएगा क्या? चले जाए भाई, अच्छी बात है, हमारे लिए बढ़िया, अपना बंदा एक पिक्सर में। डिज्नी में चला जा, डिज्नी पिक्सर। मेरी बहन मेरे को सजेस्ट कर रही थी, कहते बाल वापस ब्लैक कर ले, मतलब कटवा ले सारे, लेट इट बी ब्लैक फॉर अ वाइल। पर मेरा मन नहीं है पता बाल कटवाने का, लोग हेजिटेट करते हैं ना बाल कलर करने में, मैं हेजिटेट कर रहा हूँ बाल कटवाने में। वही सिल्वर कर रहा। मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तुझे, मेरा पता क्या प्लान है, अगर मैं बाल कटवाऊंगा ना तो नेक्स्ट हेयर कलर पता कौन सा करा रहा हूँ मैं, तो मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था उस कलर का, एग्जैक्टली वही कलर कराना है मेरे को। Wait. Here is that screenshot. बंदे ने कराए थे and I took a screenshot of his stream to, you know, fuck. I think ये था, no, not this. दीदी की बात हमेशा मानियो। खैर मैं, अरे दीदी की बात मान के तो ये कराया था मैंने कलर, उसने, अरे मैंने पता है फर्स्ट टाइम मैंने जो ग्रीन कराया हुआ था, कैसे कैसे हुआ था बात, उसने बोला कि कहते हैं तेरा हेयर कट कर दूं, मैंने कहा कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने कहा ठीक है कर देती हूँ। हेयर कट कर दिया मैं, हेयर कलर है, कहती हाँ ग्रीन पड़ा हुआ है पर ग्रीन करेगा क्या, मैं देख भाई तेरे पे भरोसा है मुझे, तू पहले हेयर कट कर उसके बाद फिर कलर कर दे, कलर ग्रीन अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो आ जाके कहते हैं सारे बाल तो कटवा ही सकते, गंजा तो हो ही सकता हूँ, तो मेरी हेयर ग्रोथ भी ठीक है, 3 महीने में बाल वापस आ जाएंगे। तो कहती इतना भरोसा है, मैं भरोसा तो है, कर दे यार, उसने कर दिए, अच्छे लगे, मैंने कहा रख लो अब, बता। ये भाई गान हटा रहे हैं मेरे, मैं तुझे दिखाता हूँ, मैं वो पहले जो तू कह रहा है ना सिल्वर, I'll show you मैं किस कलर की बात कर रहा हूँ। दिखाता हूँ ये कलर, I'm gonna get this color, अच्छा लग रहा है पता कलर ये मुझे, मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा कलर ये, सेक्सी है ना। एनिमे कैरेक्टर बनना है, एनिमे कैरेक्टर तो हूँ मैं ब्रो, बट अपनी एनिमे का नहीं हूँ, बस हूँ। I'm playing anime character in other people's life. रंगे हुए बाल, चूतियों जैसा हाल, बजरंग बरगंडी रंग चाहिए तो बात की, बरगंडी रंग नीचे वाले भैया करके देंगे। चूतिया का बट्टा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आई एम टेलिंग यू, चल मैं मैंने इसकी वो भी करनी थी, दीक्षा ने इतने इतने शॉर्ट्स डाली है ना अपने चैनल पे, इट्स गुड, लाइक मैं खोलता हूँ ना ऐसे अपना वो सब्सक्रिप्शन वाला टैब, दीक्षा का शॉर्ट, इतने सारे शॉर्ट्स डाले हैं ना उसने। भाई ये ठीक है, चैनल तो इसका चल रहा है। क्या मतलब गुटके का रंग, मानस चोद। ए मास्टर क्या कर रहा है, हैशटैग शॉर्ट्स चैनल, आई थिंक बेसिकली वही चैनल है दीक्षा का, शॉर्ट्स वाला,
स्ट्रीम पता नहीं कहाँ करती है वो। आई एम प्रीटी श्योर स्ट्रीम करती है वो, बट चैनल उसका शॉर्ट्स वाला है यार। बट अच्छा है पता है, लाइक डेडिकेटेड चैनल है, रोज कुछ ना कुछ डाल रही है, लाइक रोज 3 या 4 अपलोड्स हो रहे हैं, दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग व्यूज। कंसिस्टेंट नहीं है व्यूज, बट व्यूज हैं। किसी वीडियो पे 6.8 के हैं, किसी पे 50 भी नहीं पहुंच रहे, बट इट्स गुड, व्यूज आ रहे हैं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। 13K वाले व्यूज वीडियोस भी हैं, 10K वाली शॉर्ट्स भी हैं, so it's good, kind of proud of her. Almost over, खाना खा रहा, थोड़ा लेट खेलना पड़ेगा, 9 बजे कॉल है। the mother yep, 9 बजे खेल। मैं तो आई थिंक खेलूंगा नहीं वैलो आज, खेलूंगा तो ऑफ स्ट्रीम खेलूंगा, ऑन स्ट्रीम नहीं, दिमाग खराब करना है यार। वैलो उल्लू की पट्टी है गेम। 9:30 9:40, हाँ ये खेल सकते हैं, 9:40 तक खेल सकते हैं। सेंड नोट्स, जे को तो मतलब कैपिटल में लिख के भेजना पड़ेगा, सेंड नोट्स, पता नहीं क्या समझ के क्या भेज देगा। ऑन स्ट्रीम खेल, अरे यार वैलो ऑन स्ट्रीम, तुम रोज देखते हो वैलो ऑन स्ट्रीम, मुझको छोड़ के और 3,000 4,000 बंदा खेल रहा है अलग से ऑन स्ट्रीम वैलो। रोज रोज एक चीज खेल के बोर हो जाता, मतलब देख के बोर नहीं होते क्या रोज एक एक चीज? नहीं देखना, वही तो, मेरा खुद का मन नहीं वैलो का। फकिंग, पर मास्टर मैंने सोचा है नेक्स्ट सीजन जो आएगा ना, मतलब नेक्स्ट एक्ट जो आएगा वो स्टार्टिंग से ग्राइंड करेंगे। मैं कहते हैं कोई ऑल्टरनेट अकाउंट पे नहीं खेलना, एक मेन अकाउंट पे खेलना, उस पे रैंक अप हो रहा है ठीक है, डी रैंक हो रहा है ठीक है, बट खेलना उसी पे है, और कहते हैं ग्राइंड करना। मैंने मास्टर में, हम इंजीनियर है, हमारी जिंदगी में नोट्स, इंजीनियर तो मैं भी था, मेरी जिंदगी में नोट्स भी थे और वो भी था, मेरे को तो दोनों चीजें आती थी। मैं सेंड नोट्स बोलूं तो मुझे नोट्स भी आते थे और वो भी आते थे साथ में। मेरा वो होता था पता क्या, I'm just gonna say this, मेरा होता था कि मेरे से मतलब मेरे से पढ़ा नहीं जाता था, ठीक है, मेरे से पढ़ा, मैं ज्यादा पढ़ नहीं सकता था, ठीक है, ज्यादा सिटिंग और कहते हैं ज्यादा वो ना मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगती थी, मेरा ध्यान नहीं लगता था, मेरी कंसंट्रेशन नहीं थी। तो मेरे को क्या होता था, आई यूज्ड टू डेट अ गर्ल इन कॉलेज, एंड मेरा होता था कि उसने मेरे को नोट्स भेजना, एंड उसने मेरे को बोलना दैट इफ आई कंप्लीट दिस चैप्टर बाय बाय दिस टाइम आई विल गेट समथिंग, आई विल गेट अ रिवॉर्ड। एंड वो ठीक लगता था, ठीक है, क्योंकि फिर लगता था कि अपनी इन्वेस्टमेंट ना अच्छी जगह जा रही है। तो बस वैसे होता था, तभी मुझे नोट्स और नोट्स आते थे। स्टेज 2 डिप्रेशन, स्टेज 4 ब्रो, 2 का क्या है, एक्सेप्शन केसेस हर जगह हुआ। क्या रंगीन कॉलेज लाइफ थी तेरी भाई, वो रंगीन कॉलेज लाइफ सिर्फ पहले 3 सेमेस्टर चले, उसके बाद जो 3 भी नहीं 2, उसके बाद बाकी जो सेमेस्टर डिप्रेशन में काटे हैं ना मैंने, फक फक थी मेरी लाइफ कॉलेज। हेलो पिंगलू ही हूँ भाई, पिंगलू हाय ब्रो, हेलो भैया के बोलते हैं, जब ऐसे भैया बोलते हैं ना इतना बड़ा बड़ा फील होता है ना। हमें तो 3 सेमेस्टर भी ऑफलाइन नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं गाइस, आ जाओ जिम, आना जिम जाओ। मेरा तो जाना बंद हो गया जिम, मैंने स्टार्ट किया था, मेरे हाथ पे लग गई, बट मेरा पेट कम हो गया। मेरे को मोस्टली ये था, आई वांटेड टू रिड्यूस माय टमी एंड आई डिड इट। वो घर पे बैठे बैठे हो गया, मेरा बीमार जो हुआ था।
कोई दोस्त ही नहीं बनी मेरे तो। मैंने कॉलेज मेरी असाइनमेंट्स कॉलेज में पता कैसे बनती थी। अ, मेरी कहते हैं मतलब द गर्ल आई यूज्ड टू डेट वो बनाती थी, फिर उसकी फ्रेंड्स बनाते थे, फिर उसकी फ्रेंड्स की फ्रेंड्स बनाते थे मेरे असाइनमेंट। मेरे को क्या था, जब मेरा ब्रेकअप हो गया उसके बाद फिर भी उसकी फ्रेंड्स मेरी वो बना रही है असाइनमेंट, क्योंकि आई वाज वेरी गुड फ्रेंड्स विद हर फ्रेंड्स। मेरा क्या, मेरे को हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। और मेरे को तो कार्डियो में मजा आता है। हाँ कार्डियो अच्छा है। मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है उसमें कहते हैं ट्रेडमिल पे रनिंग करने का। एक उस पे बहुत मजा आता है, और दूसरा मेरे को क्या मजा आता है, क्या मजा आता है मतलब साइकिलिंग में भी मजा आता है मुझे। बट सबसे ज्यादा इंजॉय जो मैं करता हूँ वो करता हूँ कहते हैं, आई थिंक लेग प्रेसेस सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। गुरुजी थोड़ा हमें भी सिखाओ। सिखाने वाला क्या है भाई इसमें। एक बात बोलूं जे, एंड ध्यान से सुनना, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। I've manipulated all the people that has fallen in love with me, ठीक है। I've manipulated all the people that has ever fallen in love with me. So either that makes me a very good liar or a very unlovable person, ठीक है। So I don't know which one I am. Either I'm a good liar or I'm a very unlovable person. But I've manipulated every person who has ever fallen in love with me. चेस्ट मारो जो पंप आता है ना, ना की चेस्ट तो मेरा भी निकल गया है, बता कैसे कम करूं। कार्डियो कर, रनिंग कर। मैं पहले घर पे ही करता था एक्चुअली। मेरा पता क्या होता था, मेरा मेरा पेट निकलना नहीं था, मेरी टमी निकलनी थी। पर मेरी टमी इसलिए निकली क्योंकि मैं घर पे बैठना स्टार्ट कर, नहीं तो वेरी मतलब मैं फुटबॉल खेलता था 2-3 घंटे, तो तब मेरा पेट नहीं निकलता था। अब घर पे बैठना स्टार्ट किया, पेट निकल गया। हाँ वेरी गुड लायर सिंस स्टैंडर्ड 8। गुरुजी ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान नहीं दे रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई थिंक। आई डोंट थिंक वेरी हाईली ऑफ मी। मैं एरोगेंट लगता हूँ बट मैं एरोगेंट हूँ नहीं। मेरे को तो ये लगता है मुझसे ज्यादा चूतिया इंसान नहीं एग्जिस्ट करता, दैट्स ऑल। मेरे को मेरे बोलने के तरीके से लगता है आई एम एरोगेंट, मेरी बातों से लगता है आई एम एरोगेंट, बट आई डोंट रियली थिंक वेरी हाईली ऑफ मी। आई नो व्हाट आई एम, आई नो व्हाट शिटी काइंड ऑफ पर्सन आई एम। कार्डियो में क्या क्या आता है, क्या बताऊं कार्डियो में क्या क्या आता है। कार्डियो छोड़, मैं तेरे को कह रहा हूँ तू रनिंग कर। सबको यही लगता है मुझसे इंसान का, वो तो है। चाहो भाई अभी जिम स्टार्ट किया है पता है, बट जोश जोश में बिल्डिंग से मत। पता लगे बालकनी की जो रॉड है उसमें लटक के पुल अप्स कर रहा है, रॉड ही साथ में आ जाए, और मास्टर भाई नीचे चंदर नीचे गिर के फ्लैट हुआ हुआ है। ओ भाई चंदर वेस्ट है ना। नीचे गिरा, फिर चंदर राठी को लाठी पड़ रही है वहां से। लुक अप, 2
टू द इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। हाँ भाई, हाथे के वजन के लोग हो हो मुझे मुझे पता है कैसे कैसे लोग आते हैं जिम। हमारे जिम में एक आते थे, रुक जा कुछ की बात, हमारे जिम में दो लड़के आते थे। उन्होंने पता क्या करना है, अ, उन्होंने एक काम करना है, हर बार उन्होंने आना है, वीडियो कॉल करनी है अपनी बंदी को, सामने वो रख देना फोन, फिर वर्कआउट कर रहा है ये, मतलब कहते हैं 2 बार लिफ्ट करता है, उसके बाद बैठ जाता है, फिर बात कर रहा है, फिर आधा घंटा बात करता है, उसके बाद फिर डंबल करता है, कहते हैं कितने 3 या 4 रैप मारता है, फिर नीचे रखता है, फिर आधा घंटा बात करता है। भाई तू जिम करने आया क्या ऐसे? खाना खाना खाने दो टाइप। तू कह रहा था कि बेब्स भी आते, ये को बेब्स चाहिए। एक्सक्यूज मी भाई, मेरे को चेक करवाना पड़ना भाई, बहुत बहुत देर हो गई खांसी होता है मुझे, पता लगे सच में कैंसर कौन सा बैच। टीबी नहीं, टीबी में खून निकलता है, मतलब खांसी में, एंड कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है वो। मुझे स्टार्टिंग में निकलता था खून, अब नहीं निकलता। टेस्टिकल का कटवाने पड़ेंगे भाई, 6.5। एक्सप्लोजिव को था, अबे किसने बोला? ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में होता है, ब्रेस्ट कैंसर पता है, रेयर है बट होता है आई थिंक, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मेरे को नॉलेज नहीं है इसकी। फीमेल्स में तो सबसे कॉमन मतलब सबसे ज्यादा होता है यानी, बट बीमारी को मजाक बना रहा है, अरे मजाक क्या, मैं बोल रहा हूँ, मेरी 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 और मेरी माँ का वो है पता है, कहते हैं व्हाट डू यू से, मेरी और माँ का पैक्ट है दैट इफ मुझे या उनमें से किसी को भी होता है ना, मुझे या मेरी मॉम में से किसी को भी अगर होता है कैंसर, तो वी आर नॉट गोना गेट ट्रीटेड, the money that's gonna be used in the treatment उससे will go on a world tour or will like go to exotic places and stuff, if we are going out we are going with a bang, ऐसे नहीं बेड पे पड़ के कीमो करा के गंजा होके और बॉडी की माँ बहन करा के, नहीं, we are not going, nope, not anymore। मैं जिंदगी में ना बन गई है, फोटोज भेजता रहा। जापान जरूर है बट कैंसर से रिकवरी भी तो होती है, अरे डिपेंड्स, हर बंदा रिकवर नहीं करता ना, एंड इट डिपेंड्स, अगर तुम्हारा स्टेज 1 स्टेज 2 है देन इट्स ओके, देन यू कैन रिकवर, स्टेज 3 स्टेज 4 इज डिफिकल्ट नो, अगर स्टेज 3 स्टेज 4 है तो मतलब बहुत रेयर है रिकवरी, एंड बॉडी जितना डैमेज होती है ना ट्रीटमेंट में, मैंने देखा है पता है, मेरी नानी को था एंड आई हैव लाइक, मैंने सामने सामने देखा है, जो मतलब जिस इंसान को हुआ उसको तो पेन हो रही है, बट जो आसपास वाले ना वो और भी ज्यादा सफर कर रहा है। भाई बहुत, हाँ आई नो चलो यार छोड़ो, why are we talking about cancer, fuck it, fuck cancer। गेम खेलें क्या अब मन कर रहा है वैलो का,
एसटीबी का गेम प्लान है। और बुलाओ है दीक्षा को। दीक्षा कहाँ गई? है इधर। तुझे खेलना था ना वालो। आयरन अकाउंट से। आयरन नहीं है मेरे पास, सिल्वर से आऊंगा। पंच लाइन चोरी। पंच लाइन चोरी है ना। फुल डिप्रेस स्ट्रीम, कम टू जॉइन, शेयर योर पेन। शेयर योर पेन, हम उसका मजाक उड़ाएंगे। Because that's how we deal with our pain. है नहीं? अपनी दर्द का मजाक बना दो तो दर्द दर्द नहीं रहता। वो कंटेंट बन जाता। सही यार, थोड़ी देर गेम खेल लेते। मैंने इतनी देर से गेम खोली हुई है पर मैंने खेल स्टार्ट नहीं किया। करते हैं थोड़ी देर, खेलते हैं गेम, बाद में दोबारा बातें करेंगे। वैलो नहीं खेलूंगा। वैलो मैं तभी खेलूंगा जब दीक्षा आएगी स्ट्रीम पे, उसी के साथ खेलना है। स्टीम पे दिखा कौन कौन सी गेम है। रुक जा, गेम्स तो बहुत हैं स्टीम से। रुक जा। अभी तो ये वाली मैंने लॉन्च की हुई है, लॉन्च्ड ऑलरेडी। बाकी बैटमैन सीरीज है पूरी। अब पूरी सीरीज करने के लिए जो गॉथम नाइट्स आएगी वो भी लेनी पड़ेगी, तो I'll get it, फिर मेरी सीरीज पूरी हो जाएगी। एंड फिर काउंटर स्ट्राइक, ये सारी, एम लैब, अमंग अस, एनिमल शेल्टर, इसका भी अपडेट आता है। पता नहीं क्यों। एपेक्स तो इंस्टॉल नहीं की। आर्क मैंने इंस्टॉल की थी फिर अनइंस्टॉल कर दी। अबे रेनबो खेलने के लिए बंदे चाहिए भाई, अकेले नहीं मजा आता मुझे। अकेले नहीं खेलूंगा मैं। ब्लैक स्क्वाड तो बकवास है। की पड़ी है। मैं इतना वेट कर रहा था ना इस गेम का। इसने 7 दिसंबर को रिलीज होना था, मतलब आज रिलीज होना था इसने। मार डेट ने एक्सटेंड कर दी, 4 फेब को होगी अब। पर मैंने खरीद ली। मैंने तो मतलब जिस दिन लॉन्च हुई थी मैंने उसी दिन खरीद ली थी। मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस। फटाफट आई है, खरीद लो, जब लॉन्च होगी तब देखेंगे। ज्यादा कुछ खास गेम्स नहीं है इसमें भी भागना है। हाँ ना, ये वही तो है। डाइंग लाइट। डाइंग लाइट पहली वाली जो थी, कहते हैं वही आगे की स्टोरी है उसकी, बट बेटर है। नए तरीके के zombies हैं, नए पार्कोर मूव्स हैं, नए गैजेट्स हैं उड़ने के लिए, और कहते हैं सिटी में, और सिटी भी वो है कहते हैं ज्यादा हाइट पे है अब। पहले ही खरीद ली, अगर बाद में सस्ती होगी तो। अरे वो था ना, प्री ऑर्डर था, प्री ऑर्डर किया ना, तो सस्ती नहीं होगी अभी। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सस्ती नहीं होगी। लॉन्च के बाद भी आई थिंक लॉन्च के साल तक सस्ती नहीं होगी वो। मारना वगैरह, हाँ मारना वगैरह तो है ही है। zombies मारने हैं। मोस्टली मेले फाइट्स होती हैं इसमें, बट गन्स भी हैं, गन्स वगैरह, वो बो एंड एरो एंड क्रॉस बोज वगैरह, वो सब होगा इसमें। बाकी मैंने स्टीम का आईडी स्टीम से ज्यादा गेम्स उस पे एपिक पे है। मैंने एपिक पे ऑलमोस्ट हर गेम क्लेम की है जो आई है, पता है। इतनी गेम्स है ना एपिक पे, मेरे में भरा हुआ है एपिक पूरा मेरा। एपिक पे मैंने सिर्फ 2 गेम्स खरीदी थी, एक स्टेट ऑफ डिके 2 और वो गोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट, वो दोनों खरीदी थी मैंने। बाकी तेरा लेगेसी मैं कंटिन्यू रखूंगा। श्योर श्योर। कर लेगेसी कंटिन्यू। मेरा लेगेसी में कुछ नहीं है भाई मेरे। मेरे लेगेसी में दर्द मिलेगा, वो चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू करूँ। क्या हुआ नोआ? क्योंकि कुछ है
क्योंकि कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं कंटिन्यू है इसको बुलाता हूँ नोआ को। रुक नोआ, आजा, कम आजा, ये ले आजा। इग्नोर मार रहा। बाय, जाऊं मैं? इस टाइम थोड़ा एजिटेटेड सा है। यूजुअली इस टाइम गाड़ी में होता वो मेरे साथ, पापा को लेने जा गए होते हैं। बेइज्जती आना, बेइज्जती कर दी। आजा, मैं लेके आया यार इसको, रुक जा। क्यों परेशान है? एनिमल रिव्यूज, ये ले, रुक जा एक मिनट। आजा, बाहर जाना है? यहाँ? ये जाओ, बाय बाय बाय। अंदर आना तो फिर अंदर आओ ना। आजा आजा, तुम्हें अंदर रहना बाहर रहना। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। बेड पे गोल गोल घूम रहा है और बैठो अब आप। जर्मन है वो तेरा हस्की। क्या मैं तेरे पास आऊं अब? इधर ना बैठूं? नहीं, नो। कैमरा से कौन है ये? अभी देखा। फुल मजे ले रहा लाइफ के। ये बीजी क्या चल? अरे गोल गोल घूम रहा है और कुछ नहीं। आऊं मैं? आऊं?
इसके साथ खेलने का मन कर रहा है मुझे। इसके साथ खेलता हूँ स्ट्रीम पर अभी। मरने का नाटक कर रहा है। कैमरा क्यों टेढ़ा हो रहा है? दिख रहा है? चलो खाना खाओ। जाओ। अभी नहीं। नहीं भाई, नहीं पिलाऊंगा इसको मैं। जान थोड़ी लेनी है इसकी। मर जाएगा भाई। डॉग बियर भी नहीं है, नहीं आती भाई। मेरे भैया ने एक बार अपने उनके फ्रेंड के कहते हैं पग को गलती से चखा दी थी ढक्कन से, थोड़ी सी चोक हो गया था वो। Pretend to be dead in front of me. चलो शुरू करो। एक्टिंग थोड़ी करनी है। I'm very bad at acting. I'm just good at lying to everyone and my fucking self. चलो यार गेम खेलते हैं, बहुत बातें होगी। कितनी देर से? 1 घंटे से 1 घंटा हो गया। हाँ एग्जैक्टली 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से बात ही कर रहा हूँ। कुछ खेलते हैं, कुछ क्या जो है वही खेलेंगे। चलो मैं चला पढ़ने, बाय बाय। पढ़ ले जाके, मैं गेम खेलूंगा। गेम Eden Finch. Full window, full screen. ठीक है यार। फक गुन्नू, दरवाजा बंद कर दे प्लीज। ओके सेंसी बहुत कम लग रही है।
A lot of this isn't going to make sense to you. Wait, wait. Subtitles. Subtitles. I want this game with subtitles. Don't tell me subtitles नहीं है. And I'm sorry about that. लिखा I'm तो just है. going to start at the beginning with the house. Dumb. Kids are dumb. I am a kid. Shift to zoom. That's new. Control to zoom. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Okay, just to tell you guys, मैंने इस game के बारे में पढ़ा and everyone says that this is a fucking masterpiece. So I have my hopes high because I dig games like these. Hopefully, it is good. Wait. मैंने दो गेम्स खरीदी थी एक साथ, एक ये खरीदी थी और दूसरी वो खरीदी थी लास्ट डे ऑफ जून. वो भी अच्छी गेम है. मैंने स्ट्रीम पे स्टार्ट की थी पर ऑफ स्ट्रीम खत्म कर दी थी गेम मैंने वो. मैं मतलब आई एम नॉट वेरी गुड एट व्हाट डू यू कॉल commitments in gaming and stuff in life. Relationship wise I'm good. चलो कंटिन्यू. मेरा ना आज ऐसा लग रहा है स्ट्रीम पे ही काम हो जाएगा मेरा. डेड. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. हेडफोन्स माइक यूज कर रहा. हाँ हेडफोन माइक यूज कर रहा हूँ. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. टू व्हाट देखा अभी जो हुआ. सबटाइटल्स जो थे वो इस पे कहते हैं रेल के ऊपर थे एंड आई पुश द रेल एंड सबटाइटल्स नीचे गिर गए. क्या ब्रिलियंट. पता है ब्रिलियंट है ये. दूसरा माइक यूज करना जब तू खांस रहा. दूसरा माइक अभी है नहीं यहाँ पर. इट्स नॉट विद मी एट द मोमेंट. This property is protected by video surveillance just process with the prosecutor. Okay. Can I fall down? No, I cannot. क्या एटमॉस्फेयर है यार. ऑडियो बढ़ाऊंगा अब. Dude, क्या एटमॉस्फेयर है. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. अभी भी ऐसा ही Maybe होगा. she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Sweet. यहाँ से नीचे जा सकता हूँ लाइटिंग का. I'm gonna go down first. Missing posters of a little boat. क्या लिखा है. नाम क्या लिखा है. I can't read.
ज़्यादा जूम नहीं हो रहा। हाँ, कोई फिंच है, नॉल्टन फिंच है, क्या फिंच है, समथिंग फिंच है। ये कैरेक्टर बच्चा है क्या? बच्ची है छोटी, आई थिंक ज़्यादा छोटी नहीं है, टीनेज बच्ची है आई थिंक। The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Wait, इधर से भी there's a way to go from The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. मेरे को बड़ी वो वाइब्स दे रहा है, लाइफ इज स्ट्रेंज वाइब्स दे रहा है ये गेम। आई कैन गो बैक राइट। मेरे को एक्सप्लोर करना था ये, बट आई नॉट श्योर आगे जाने का रास्ता ये है वो है, मेरे को आगे नहीं बढ़ना अभी। आई काइंड ऑफ वांट टू एक्सप्लोर। ऐसे ऐसे हाँ, मिल्टन फिंच के मिसिंग पोस्टर्स। गेम वाइब तो बहुत अच्छी दे रही है मुझे। ओह, No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. वेट, आई कैन गो। आई थॉट बंद है, मुझे वापस पीछे से नीचे से जाना पड़ेगा, बट आई कैन गो फ्रॉम हियर। हैं? All roads meet the same area, right? हाँ, वहाँ से ऊपर आती है वाटर। क्या चार्जर? 26 है। How much? मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी स्ट्रीम करता है। मैंने 1 घंटा और स्ट्रीम करना, फिर ले लेना तो। The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Dude, क्या घर है man? Seriously? अगर ये रियल लाइफ होती तो मैं लेफ्ट साइड से ऊपर जाता, बट दिस इज गेम तो हम राइट साइड से जाएंगे। As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. प्लास्टिक की कुर्सियां हमारे भी यहाँ पे होती हैं सेम। सेम प्लास्टिक की कुर्सी। Now, as a 17-year-old, I Oh. knew exactly what those words were. 17 years I old. was afraid of the house. Got it, Ash? बच्चा नहीं है, 17 years old. क्या नाम होता है नगर आज? राज नगर। गुन्नू ने अपना लगा लिया ना।
Oh, I thought, no, this is a swing, right? Yeah, it is a swing. Gary's potting mix plus fertilizers. Healthy plant, I think. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Okay. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Dude. Yeah, this game is giving me good vibes. Hopefully this doesn't disappoint me, okay? ये तो खोला नहीं. So now let's try the garage. What if it doesn't? Oh, back door का होगा पक्का. Intruder alert! Intruder Crawling through the alert! doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. Right. इस ऐसी गेम्स में ना म्यूजिक इज द की. So music turn up रखना पड़ेगा. I have to keep the music up. The Holy Feast, Witch's Kitchen और Viking Valley. ये तो सारी वो हैं. Flavors of India. मतलब जो सबसे आपने Cosmic. A pipe for pipers. So tap. Fishing rods. For the first time in years, Eddie, Don, Lewis, Milton, Edith. I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. The loving memory of beloved that Edith, son of Dawn, did consent to Edith, Eddie, list. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Cannot open this door. Oh, I cannot open this door. Okay, time to explore the house, I'd say. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off,
killing everyone but sparing the furniture. Dude, बहुत sexy. Modern. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. कितना cozy room है ये वाला ना? It's fucking cozy. TV, sexy. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Fucking awesome. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Wait. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Time to go upstairs. After Milton disappeared, कितनी books हैं Mom यहाँ? sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Okay, now I have to peepholes. Yeah. AD. Kevin. Wait, I'm not gonna. Not yet. Every fucking area looks like progress. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Yeah, every place looks like progress. कहाँ जाऊँ? Barbara का तो ये room है, okay. Dude. I want this to be my fucking house. Edie's father Odin built the original house. कितना sexy है बताया. All these photos. Dude. क्या architect? Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Okay, this is locked. Good. Not that way then. Now check this one and then go there. The open one. People. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. I can peep into the other rooms, right? Yes, I can. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Okay. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. There's that portrait. So now I can peep in all the rooms, right? Dude. Oh, sexy. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Happens to the best of. Molly room. Oh, my Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Cool. Wait. I know. मैं बहुत slow लेके जा रहा हूँ game, but there's this room as well, right?
people. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. That was a metaphor. She meant books. Don't be scared, little child. और कोई room तो नहीं? There's no other room, right? Yeah, that's all there it is. हर room के peepholes I have peeped. Now I can go to that room, open room. It's a long fucking room. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Okay, sexy room. Give me a sec. मैंने कुछ पढ़ा था Steam पे about this room. Let me just check what that is. Wait. I've been fucked up. Turn the corner, you can see the. Turn the corner. What? I'm not sure what that was. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. That's fucking cool. I'm getting fucking ideas for my own house. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Okay. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Okay, we're gonna play as other characters, right? The gerbil food was dry, but I didn't mind it. My Halloween candy was all gone. Halloween candy was all gone. Okay, now I feel like I'm a kid क्योंकि वो सब वो हो गया. I thought about eating Christopher, but I held back. Okay. हर चीज का स्केल बड़ा हो गया ना अब.
I kept eating and eating. Toothpaste. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Okay, that was unexpected. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. The babies were all gone. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Where did she go? Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. What?
I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper and it tasted really good. भाई क्या चल रहा है? There. I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. I'm a fucking rope, I guess, yeah. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. हो रहा है bro, हो रहा है. I was big, but I moved real quiet. मेरी एक्सपीरियंस. I wanted to stop, but also I didn't. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. It's I my got room. closer and closer. It's my room right here. चल भाई तू का मोड. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Dude, that's dark. That's fucking dark. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. ED, okay.
I'm the only one alive, right? Yeah, I'm the only one alive. पापा ने टच संग्रह बोला तो तुम बालों में ही रहा. Exactly. Do I dare? No, I don't. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. ये कौन सा गेम है? ये वो What I Remains of spent a Edith lot of Finch. time in Great Grandma Edie's room. Sexy गेम लग रही है, पता है? मतलब मैंने सुना है इस गेम में. I've heard a lot about this game. And जहाँ तक सुना है बहुत We got अच्छा along, review and है. it was a good place to hide from my mom. When Edie Dragon told kill people sandwich. Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Okay, nice. Cool. Built 1937. Sven Finch. Okay. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Celebrity. Interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Wait. What the fuck? Okay. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. That's an insult. Okay, that's cool. That's really, really cool. घर का है ना architect या? Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Theodore Finch. I think room to room जाना है. Shrine sketches. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Edie sounds like a wonderful grandma. Okay, now I am. That's okay, but carpet washroom में even Monday, Tuesday. Okay, these are medication. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Yeah, the pink bathroom. It was a pretty big trace. Exactly. Everything is fucking.
Another secret door. There's a secret in the bathroom by Sven and Edith. Edith. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. I cannot interact with any. ये तो Polaroids पड़े हैं ना. Someone was drinking a lot. Sam Finch. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. Dude, these are don't. I don't want to progress yet. Dude, these are fucking room goals, no? To command center. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. And he did. Dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Dude, kya? I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room.
Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. I can understand. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Everything is connected. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara's room. But like, it's kind of, what do you call, crazy to think everything is connected in this house. Happy birthday, Barbara. Cigarettes? I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Okay, that's cool. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it Court of the Darkness. surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst.
gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the Hookman, and बहुत sexy game है. was speechless. He was बहुत quite sexy game. smashing. And whoever he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. The Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom.
But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. That's fucking dark. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. That was actually insanely dark. So now I have to go to the basement, right? Yeah. गेम देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा, अभी तो नहीं देख पाऊंगा, बाद में देख लूंगा। I guess now I know why Mom doesn't like me playing with the music box. मैं अनलिस्टेड ही करता हूँ स्ट्रीम। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है भाई, बट कंसेप्ट इतना सेक्सी है ना इसका। Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. And I know what exactly. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Depressed kid, extremely depressed kid. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule,
living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Dude, हर जगह books हैं. Like, what is going on? But I fucking love this. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Can't I go inside? Please tell me I can go inside. I can't. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. ठीक हो, तू बता कैसा? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. बहुत dark है यार game ये तो. I'm sure my mom was trying to protect me. बोलो बाबा की. दे दे. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe 2, ये तो ये वाला scene. I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else.
भाई बहुत सेक्सी गेम है मास्टर, But now पता I'm है worried the क्या stories सेक्सी स्टोरी है, themselves might क्या be the सेक्सी problem. कंसेप्ट है गेम का. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Vision Strikers won. I don't know if I should even be writing this. दीक्षा, मैं तेरे को recommend कर रहा हूँ ये गेम. तुझे ऐसी गेम्स पसंद है, मुझे पता है. I'm recommending you this game. Please, please, please play this game. ठीक है? What Remains of Edith Finch गेम का नाम है. It's fucking beautiful, पता है. इतनी sexy गेम है ना ये. Like concept इसका, the way subtitles are showing, फिर कहते हैं story इसकी, कहते हैं what do you call, I'm at loss of words. Like me being me, I am at loss of words for this game. अभी complete नहीं की मैंने, I don't think आधी भी हुई है, but I love this game. बकरी हेयर नहीं, बकरी नहीं है I think इधर. I'm in love with this game already. I am Maybe good. it'd be better if all this just died with me. Exactly. But I thought you should know about your family You should know about your family. and the history you're a part of. Can I? I can't. I have to go there. Okay. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Okay. Dude. Oh, I'm getting the feels now, पता है. मैं बहुत देर के बाद किसी गेम से emotionally attach हो रहा हूँ, and I'm kind of feeling the emotions. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night.
भी कर ले भाई इतना. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Oh fuck. Okay, I'm 17-year-old girl that's 22 weeks old pregnant. Now I get it why when I looked down I had this tummy out. I thought I was fat tha, but I'm 22 weeks pregnant. Oh, mom never released anything. वो भी काटेगी टेंशन मत लो घूम फिर के लिए. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. अरे I'm not pregnant game में the character I'm gonna have playing to is a shoot anything? 17-year-old girl. It's a named hunting Eden trip, Finch Dawn. that's 22 Shooting is weeks strongly pregnant. encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. अरे इल्जाम तो थोपने होते हैं. तो where is the kid? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. किसकी फोटो लेनी है? ओके आपकी Aw. But be envious though I can get pregnant and you can't. ये जा रहता है वहाँ बंदे भी ठुक जाते हैं. इल्जाम तो कम है. एक मिनट. मैं थोड़ा प्यार कर लूँ इसको. तुम लोग भी देख लो.
ऑफ कोर्स डॉग यार, मैं कहाँ। आजा नोआ। आजा इग्नोर कर रहा हूँ। तूने इधर सोना बेड पे, नीचे सोना बेड पे, बेड पे जाना। आजा बेड पे आजा। सो जाएगा सो जाएगा। मरने का एक्टिंग करे एक बार। अरे मरने का एक्टिंग कहाँ करेगा। ये वो करता है पता है, जब मैं हेयर ड्रायर मारूं ना अपने आप को बाल बाल सुखाने के लिए, तब हेयर ड्रायर पे भूंगता है। इसको लगता है हेयर ड्रायर इज लाइक हर्टिंग मी और समथिंग। उठ गया। अरे सो जाएगा। लेट अभी लेटा है यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद खुद ही सो जाएगा। रात को बोलते रहा हूँ, पहले यहाँ पे सोएगा, ठीक है, उसके बाद उठ के आएगा बिल्कुल जहाँ पिल्लोज है वहां पे सोएगा, फिर आके मेरे सर पे सोएगा, फिर उठ के मेरे पाँव पे सोएगा, फिर नीचे उतर के जमीन पे सोएगा जहाँ पे इसका बेड है जमीन पे वहां पे। इतना उठता है रात को। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सो जा। गुड नाइट। आऊं मैं? आया यार, मैं इसको प्यार कर। मेरा भाई कपड़े चेंज करने लगा कमरे में घुसते ही लॉल। नहीं आया, हो गया ठीक। अरे कैमरे से हटाओ, देखने दो उसको। अरे मेरा भाई कपड़े चेंज कर रहा है ना, तू उठ के एक बार अंदर चल जाना। अब जा। अब नहीं अरे अब नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तू। देख, एक बार बैठ जा, फिर मैं इस साइड कर रहा हूँ। इसको नोआ को देखना। हाँ ये देख अब।
नोआ क्या चाहिए? पंगे लेता रहेगा। अब खेलेगा ये उसके साथ थोड़ी देर, फिर सोएगा। चलो अब गेम कंटिन्यू करते हैं। बहुत देर हो गया नोआ। एक दिन करूंगा सिर्फ नोआ को लेके बैठूंगा स्ट्रीम पे, ओनली नोआ। सैड बैकग्राउंड हटा। अरे सैड वो गेम का बज रहा है। ले भाई ले, बंद अभी। देख ले नोआ। मेरे भाई को काट रहा है नोआ। रुका है, पंगे लेके आया मैं इससे। ऐसा रहेगा नोआ की मेमोरी से चुप करे कुछ। खच 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 लॉल गुन्नू गुन्नू भी लाइक कचरा रखे जब दिन तो आ गए चले। हम तो आदत है ऐसी सबकी। अरे रजाई में। नो बाय बोल दे सबको। नहीं भाई। चलो गेम कंटिन्यू। एक दिन करूंगा नोआ को लेके स्ट्रीम, बस सिर्फ नोआ दिखाऊंगा। मैं और नोआ बैठे रहेंगे। ठीक है डन। स्पाइरल मॉडल मुझे पता है। टैगलाइन। अभी किसकी फोटो लेनी है? फोटो पे फोटो खींचनी है, पता नहीं। नो ये क्या काट रहा है क्या? खेलने के मूड में है वो भी। Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious.
I know, Dad. You're always serious. This place would have been so nice. Doesn't being out here make you want Hannah. to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. I went to a We found an old logging trail document migrated, but with once deer an everywhere. islands might be bad for people who are not into I bet if I internet could and remember city where that life, but trail was, island we'd though. spot a buck for you in no I time. know. मैं तेरे को बोल रहा हूँ it's been like a month and a half. मैंने फोन नहीं यूज किया है. मेरा फोन बंद है. मेरा फोन लॉकर में है. And I'm so feeling so peaceful without it, right? पता है बिना फोन के my life is so peaceful. And I'm like ना मेरा Instagram बंद है. Accounts मेरे सारे deactivated हैं. WhatsApp भी नहीं कर सकता. No, neither I can call someone nor someone can call me. Like मैं इतना peaceful feel करता हूँ ना बिना फोन के. And अब तो like पहले तो होता था कि फोन इज अ नेसेसिटी, ठीक है. अब बिना फोन लाइक विदाउट फोन इज अ नेसेसिटी. मेरे को मॉम बोल रहा है, मेरे को सब बोल रहे हैं दैट टर्न ऑन फोन, गेट फोन एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट वांट टू गेट अ फोन नाउ. आई माई सेल्फ ब्लॉक्ड ऑल टीचर्स एंड फ्रेंड्स. ना रहेगा 5 बजे. इट्स नॉट अबाउट बीइंग blocking and unblocking. It's just I don't want to use phone at all. Like I'm good without it. कैम थोड़ा नीचे कर. बेटर. I just don't want to use phone anymore. Like fuck it. बिना फोन के लाइफ इजी है, चल रही है. It's good. Go with family, sit, sip coconut, eat food, click picture, enjoy life. Exactly. Give me a minute to check the map. I do block people so much when I'm out. I swear. I'm such a free bird. I swear people. Let's see. You don't need to waste any more film on me, kiddo. चुप करो डैडी. Maybe. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just... Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn! Cute, dude. Shot, camera, click. What a fucking fantastic game. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! And he died like that. Lalo, man. Yeah. Of all these stories, that's He the died one like I that. wish most that my mom had told me. Dude, क्या sexy game है यार ये. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something.
हाँ horror it is. मैं नहीं खेल रही है. You have to try this. Like it is a like emotional kind of depressing game, but it's very very good. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Okay. Then now तू खेल मैं देखा बहुत है गेम्स का. खेल मैंने देखा बहुत है गेम. As you wish. But where do I go from here? I cannot open this door. Oh, there it is. Secret passages everywhere. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. This family has lost a lot. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I'm playing as a kid, I think he saw things the rest of us don't. Bath time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. I'm gonna drown. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. I'm pretty sure this kid is gonna drown. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was he saw, it sure made him happy. See, everything is coming into water और पानी का वो बढ़ेगा and I know how silly it sounds. That I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. okay. I'm not drowning. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Gregory's a fucking kid. He can hear it.
Huh? I wish he could have told us. He is going to drown. About the world he saw. Hey, there's so much I don't understand. About Gregory. About everything. He died, yeah. He died. But I know what happened तेरे को वो wasn't your दिखाता हूँ. fault. Tree दिखाता हूँ. Everyone is dead in this game. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. See, in ये family tree and we are playing Edith. And everyone else in this tree is dead. And we are pregnant. So there's going to be someone after us. But जहाँ तक मुझे लगता है we'll die in the end with the kid and that would be the end of Finch family. I think that's why the game's name is What Remains of Edith Finch. Something like that. Gregory, Dawn, Gus. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd Things see like a wedding in our yard. This makes game so good. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, "We don't need a stepmom," were the words that I remember. Husband and wife. You may kiss the bride. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Gus. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power, but all my father said to this was, "Make the music louder." I
I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. That's cool. कमरे के अंदर rock climb. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. I'm 22 weeks old pregnant and I'm climbing stuff. DAWN. Cool. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Okay. Sanjay नाम है इसका. Cool. Flying to India. Okay. This makes me kind of what do you call, long distance है ना, so I've, what do you call, I failed this. ये जो calendar है ना, I failed this calendar. Meet with after school, pack, flying to India. Where did I come down? I have to climb that again. Yes. Yeah, I have to climb that again. Fuck. That. Wait. Get down. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Scientific method of The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Holy fucking. अलग हो जाएंगे. We'll follow the game. We won't try to break it. In Milton का room है ना? After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings.
क्या हुआ था 3 मिनट पहले? कुछ नहीं हुआ था. We met, like game में करेक्टर है उसका नाम संजय है and she pronounced it like संजय. So दीक्षा ने वो किया है, तेरे को टैग करके बोला था. डूड घर तो बहुत सेक्सी है. आई डोंट केयर, आई डोंट लाइक. क्या सेक्सी घर है यार. Milton Finch in The Magic Paintbrush. I was 4 when Milton disappeared. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. अब इस फैमिली को किसकी नजर लगी है? अरे वही तो है. This family, there was a dialogue in this game यहाँ पे बोलती है, कहती है we got so used to the, I mean एक तो डेथ वाला था सेम डायलॉग, एक ये था कहता है कि I don't remember the dialogue exactly, but it was something like कि कहते हैं we believed so much in the family curse that I don't exactly remember it, but कुछ ऐसा था that we got so used to the family curse that जो that curse became real or something. तो वही है, everyone in this family died some way or other. So that's what this game is about. We are living the memories of people who have died. And conclusion क्या होगा, I have no idea. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. This is Louis's room. यार किस तरीके से इन्होंने घर बना, like you are in. जिंजर से मिलके आया था. Louis's room smelled very, very familiar. क्या? एक मिनट, give me a sec, मैं इसको देखूंगा. क्या हुआ? क्या हुआ?
जिंजर का नाम सुनते ही जोर जोर से भौंक। लड़ाई हो गई है क्या इनकी? क्या? किनकी लड़ाई? दूसरा वो आई थिंक उसको बाहर कुछ दिख रहा था शीशे से। जिंजर एंड नोआ की नहीं नहीं लड़ाई नहीं हुई। इसको बाहर कुछ दिख रहा था शीशे से, मैंने कर्टन्स आगे किया था, चुप हो गया। नहीं नहीं इनकी लड़ाई कहाँ से हुई है? आत्मा दिख जाए आत्मा ब्रो, मेरे को नहीं डर लगता भूत से। I'm really not scared of ghosts anymore. Fuck them. Let's continue. That part of him lived on. बाहर नहीं जाना। Casanova का shot है Nova, a girl in red dress. Now I can really hear her getting tired from, you know, ये किसी book का नाम, a girl, Casanova, a girl in white dress. बुक का नाम तो है आई थिंक, किसी हॉरर मूवी का नाम है। लुइस फिंच। Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Lewis is STV. Oof. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. I respect that. And Indian. Lewis is probably me, I guess. Plays video games but is bad at it. Indian and all this. वह अलग ही रेव चल रहा है लुइस का, है ना? Lewis is probably me. I dig this room actually. And let's see how he died. Hopefully I'll die that way too. This is how GTRP players in real life. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance suicide. abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. Most probably he committed but he suicide. withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Dude, this is so fucking cool to dekh raha, like, come on. This is exactly how things are, like, I have to. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. I'm pretty sure And this guy things that committed. have not names. I'm pretty sure this guy committed suicide in his story. He knew it was all in his head. But
he took it very seriously. I had hoped he'd And find that's how himself. I'm gonna go. But he found something more. I worried about him then, 2D से 4D हुई. daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, That's what they focused. said about sister and Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. देख भाई इसकी स्टोरी तेरे जैसी हो. I know. Then he made musicians. He's gonna. I'm telling you, this guy is gonna kill himself. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. I was humming a lot today, and I was Every humming day his Hallelujah song. imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery, फिर उसका गिटार टूट गया. but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Mario. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Dude, तू notice कर रहा हो क्या रहा है इस गेम में? As we are going into that Lewis's story, वो दिखा रहे हैं that उसका mind जो था वो deluded हो रहा था. He was hallucinating things, like वो अपने दिमाग में इतना involved था, और दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ रहा है. अब मैंने जो चीज नोटिस की वो ये हुई कि पहले कितने जो हम फिश को काट के कहते हैं कन्वेयर बेल्ट पे डाल रहे हैं, अब उसकी साउंड धीरे धीरे फेड हो रही है, और जो गेम की साउंड जो मतलब उसका वो है क्या कहते हैं इमेजिनेशन है, उसकी साउंड ज्यादा आ रही है. लाइक क्या मतलब अटेंशन टू डिटेल है यार इसका. अब इसकी साउंड कम आ रही है पीछे कन्वेयर बेल्ट की, और गेम की साउंड ज्यादा आ रही है. He'd conquer a city, then immediately push on. हाँ ना, पार्ट तो कम हो ही रहा ऑब्वियसली. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on.
biography of Darwin. I know. बहुत In research की. Lewisburg, he heard rumors of a Beautiful prince or handsome queen. Wait. What? What? Beautiful prince, handsome queen. Jaldi, jaldi, jaldi. Jaldi. I'm moving towards handsome queen. handsome queen. Save a slot. अरे भूल गया मैं. दोबारा कर लूँगा. No problem. The queen was on her own quest for Radiant Rainbow, Sinister Serpent. Come on, fast, fast. अब नहीं. अब I want you guys to tell me. और सब हिंदी. ये भगवत गीता चल रही है साइड पे पता. जल्दी बोलो. Rainbow, okay. radiant rainbows. Sinister too late बोली. Next दीक्षा जो बोलेगी वो. जल्दी बोल. Electric सितार, silver harp. He followed the sound of her Electric सितार, silver harp. जल्दी. electric sitar. Sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. संस्कृत लो. हाँ संस्कृत लिखी हुई है. Even then, his logic remained sound. देख पूरा गायब हो गया वो. बिल्कुल साउंड He नहीं आ knew रही the उसकी. है world was बिल्कुल. all in his imagination. हैंडसम क्वीन देख जरा. देख अब गेम 2D से 4D से But he was 3D so हो गई. proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. क्या? For someone who'd never known. मैं honestly बोलूं, मैं ये गेम खेलता हूँ. I'm feeling that I'm not worthy to play this game. पता नहीं क्यों. I'm like मैं inferior feel कर रहा हूँ. I'm like I don't deserve to play this game. पता नहीं क्यों. In success in the real world, I think it was overwhelming. Sean Bellin. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. ये लड़के जो अभी My चल रहा है वो तो imagination जे is है as क्योंकि real as my लड़कियां भाग body, रही है he उस. told me. It was hard to argue with him. Oh. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. And he died in an accident or he killed himself. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions.
including the wise Calico who'd insisted on advising him. Exactly. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. I know that. Bend down his head. And it's a guillotine, right? Yeah, this is a guillotine. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. I'm so fucking dumb. She's writing this diary for the kid. And we are reading the diary from the perspective of the kid. And Edith is narrating the story. अरे बहुत ही मस्त स्टोरी उसके दिमाग में था ये बट ही गॉट सो डिल्यूटेड दैट ही फॉरगॉट व्हाट वाज रियलिटी एंड व्हाट वाज कहते हैं इमेजिनेशन तो व्हेन ही वाज लाइक उसमें जैसे वो चल रहा था ही वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स इसने ही डिड इन रियल लाइफ वो कन्वेयर बेल्ट पे चला एंड ही कहते वेंट लाइक ऑन द कन्वेयर बेल्ट आगे जाके जहाँ पे फिश प्रोसेस होती है वहां पे ही डाइड exit. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Family disorder, I think. May in last we get to know. Maybe. I'm not really sure what's going on. Wait. I can't. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Dude, ये कितना cool है ना? My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Are we finally entering our room? But it had to end one way or another. I think all that's left now was to tell you about that last night. This is our room. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. देखो कुछ
देखो कहते हैं कैलीग्राफिक पेन्स का शौक है क्या? अगर देखो इंटरेस्ट है तो मेरे को तो डिस्कॉर्ड पे टेक्स्ट करना, मैं तुझे कहते हैं एक चीज भेजूंगा. They are the most beautiful calligraphic pens I've ever seen. Ink यूज करनी पड़ती है उसमें, like ink pot यूज करना पड़ता है डिप करके, but they are so fucking beautiful. She has a typewriter. Typewriters are good. Your moms write a lot. I write a lot as well. A lot. I used to have like 6 or 7 diaries ongoing. अब लिखना छोड़ दिया. Maybe that writer in me died, but I used to write a lot. And I'm like, I kind of miss writing. And maybe I'll start writing again, but I kind of miss it. Maybe that's why this game is like a touchy thing, because we are reading a story that someone's written. She literally has her handwriting. So if you see her Hindi writing, you will fall in love with. Like, it's better to fall in love with her daughter than her, right? If I'll fall in love with her, that would be inappropriate, no? She makes my writing so prominent, like I love her handwriting. That's good. Love. I'm saying facts, right? मेरी हैंडराइटिंग तो डॉक्टर से बेकार. डॉक्टर की हैंडराइटिंग थोड़ी होती है, डॉक्टर लाइनें मारते हैं ऐसे. I can easily fall in love with people who write. You know, I don't care good or bad. I just want people to write and keep writing. If you meet your younger self and you're allowed to give only one advice, मैं मच्छर मारती. Give only one advice. What would it be? मैं एक ही चीज बोलूंगा अगर I have to say something to my younger self, that don't be afraid of expressing yourself. That's all. You were 6 and you burned down a sofa. हमने कितनी similar चीजें की हैं. I think I was 7 or 8 and I burned down a table. मैं डर गया था. I was under the covers. मैं डर गया and candle जली हुई थी टेबल पे and गलती से मैंने उसको किक कर दिया and जब मैंने शीट्स हटाई तो पूरा टेबल पे आग लगी हुई. Lit a candle a lot, and once I lit and sat under the sofa to hide and enjoy the fire. है ना, मेरी फट गई थी उस टाइम. क्या करूं, आग लग गई है टेबल पे. फिर मैंने एक ही काम किया जो मैं कर सकता था, वापस अंदर गया और फिर मम्मा मम्मा चिल्ला रहा, मम्मा मम्मा. और क्या करता. क्या गेम है. टर्कोइज बहुत अच्छी गेम है. मैं स्ट्रीम ये अनलिस्ट करूंगा. अगर तेरे को स्टोरी देखनी है पूरी गेम की तो वो कहते हैं स्ट्रीम दोबारा देख सकता है. मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अलग से इसकी स्टोरी यूट्यूब पे देख या फिर गेम खुद खेल, बिकॉज इट्स अ फिनोमिनल गेम. पता है इतनी इतनी ब्यूटीफुल गेम है ना. माइन वुड बी इट वाज मेंट टू बी. नथिंग इज मेंट टू बी ब्रो. लिंक से देख सकते हैं ना. हाँ देख सकते. Once I wanted to eat Maggie and mom said she won't make it. I yelled and mom tried to slap and bang my head. Now you are giving me the reasons why you're like this, huh? Bhoot game, no bhoot game. Emotional story. Power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles.
When my See? mom set up the library, I don't think she knew Candles. about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finch by Edie Finch. Okay. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the time... दीक्षा तू स्टार्टिंग से देख गेम ये घर इतना सेक्सी घर है ना भाई क्या बताऊं लाइक हैंड राइटिंग ब्रो बहुत सेक्सी मैं एवरीथिंग इज आई थिंक ये लास्ट पार्ट है इसका बिकॉज ईडी रह गई है सिर्फ राइट एवरीवन एल्स इज हाँ सबका स्केच बन गया ईडी रह गई है बस रस्किन बॉन्ड वाला went way out. Okay, we'll end this and then we'll talk for a while. It was the उसके बाद stream end first करेंगे. and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Is she older now? Who? No, Edie is the grandma and Edith is the person reading the book now. Grandma is dead. 2010, 2010, 2003, 2016. The narrator voice. Oh, narrator is the grandma now. The Edith is reading the book and grandma is narrating now. So it's like इस गेम का स्टार्ट क्या हुआ था? We were on a ferry boat and we opened a book and we started reading. And I think we are the daughter or son of Edith. And इसलिए Edith started narrating the story. और फिर when we are reading the story of other people, they are narrating the story. So it's kind of Inception. Who is Sanjay? Sanjay is the husband of our mom, whose name was Dawn. Sanjay is our father, basically. I got turned around. I started seeing. नहीं, Dawn की story हो गई है. Sanjay is started seeing. Maybe Dawn की story बाकी है, I'm not pretty sure. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Exactly. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car and I never saw Great Grandma Edie again.
The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. Dude! My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. That's how Dawn died. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. We are the kid, we are coming out of the womb. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. हाँ जी, स्टीम से लिया है ये।
टॉरेंट कितने की थी वैसे? आई डोंट एग्जैक्टली नो, मेरे को देखने दे। जो दूसरी वाली गेम है ना जो मैंने इसके साथ ली थी लास्ट डे ऑफ जून, उसकी स्टोरी इससे ज्यादा सैड है, बट ये 565 की है। उसकी स्टोरी से ज्यादा सैड है, बट आई डोंट नो व्हाई इस गेम का इम्पैक्ट ज्यादा मुझ पे। वो गेम की मतलब तुमने स्टोरी नहीं देखी क्योंकि मैंने आधी ही खेली थी स्ट्रीम पे, पर मैंने ऑफ स्ट्रीम खत्म की थी वो गेम। बट उस गेम की स्टोरी पता क्या थी? दैट वी आर प्लेइंग द हस्बैंड, राइट? बट द हस्बैंड इज द वन हु डाइड, एंड हम अपनी मतलब वी आर प्लेइंग द इमेजिनेशन ऑफ आवर वाइफ। हमारी वाइफ की जो बुक है, हमारी वाइफ एक बुक लिख रही थी फॉर द वेज टू व्हाट डू यू से सेव आवर, हाउ लाइक क्या डिसीजन होता है कि हमारा हस्बैंड उसका हस्बैंड बच जाता। तो वी आर प्लेइंग द इमेजिनेशन ऑफ आवर वाइफ। तो उसकी स्टोरी मतलब ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, इमोशनल है, बट I can replay a story. Not now. What a beautiful game, yeah. मुझे ऐसा टच पता है किसने किया था? लास्ट लास्ट जो गेम मैंने खेली थी वो थी उसका नाम भूल गया गेम का मेरे को। लाइफ इज स्ट्रेंज। वो मेरे को बहुत इमोशनल लगी थी गेम, बट good. I'm glad games like these exist. Oh god. नुआस हो गया देखा। अभी पाँव पे सोया हुआ।
बंद करें स्ट्रीम? बहुत स्ट्रीम हो गया आज. How does it feel having a dog? It feels like you have a child. That's all I can say. It feels like you have a child. चल बाय फिर. गुड नाइट जा. गुड नाइट. मैं भी जाता हूँ यार. I have to be like Lewis. कहाँ गुड नाइट? हाँ, सो तो मैं भी नहीं रहा. हाँ, I'll stay awake for a while. बोली. I'm just ending stream because I'm too depressed to talk about anything right now. The game अच्छी है. I love the game. It's depressing. Maybe that's why I love it. But मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अब किसी से बात करने है. I just want to take it all in. अच्छा, गुड नाइट. बाय. कल मिलते हैं गाइस. मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं टायर्ड नहीं हुआ तो आई स्ट्रीम. कल भी कुछ ऐसे ही खेलेंगे. वैल्यू नहीं खेलेंगे कुछ दिन. डिप्रेस है. I don't know. I think it's kind of a weakness. I don't know, but I'm telling you, अगर मैं कोई कार्टून देख रहा हूँ ना, just कार्टून देख रहा हूँ, that animated movie example Frozen या कुछ, and if someone dies in that movie, I cry. I don't know why. मैं इमोशनली कभी स्ट्रांग नहीं रहा अपनी जिंदगी में. ना मैं कभी इमोशनली स्ट्रांग हो सकता हूँ. आई क्राई ऑन लिटिल थिंग्स. मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत टफ शो करता हूँ अपने आप को, बट मैं बिल्कुल नहीं. I'm a scared little kid inside that cries when a character dies. When Beckham retired, I cried. चल यार कल मिलते हैं. बहुत हो गया आज. Eat my pizza. मेरा भाई फ्रेंड देख के हंस रहा. He doesn't know that he's gonna cry his ass off at the last episode of season 10. He he's gonna face reality that every good thing comes to an end. He's gonna get hit hard. And I don't want to stop him because I want him to know what it feels like. मैं इतना रोया था ना जब फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड देखा था मैंने. Like I cried my ass off. Like dude, I'm not gonna tell him. I'm not gonna tell him what's about to happen with him. Shock of reality. ऐसे me and my friend I saw
No, we never gonna. I had to see it. I was going through my breakup, so wanted a distraction. I wanted another medium of sadness in my life. I think I crave sadness a lot. It's something that makes me feel happy. Sadness is something that makes me feel happy, makes me feel genuine. So I crave sadness and everything. I wanted a new way of getting sad, so it was Friends. मैं बहुत वो हूँ पता है क्या बोलूँ डिस्ट्रॉयड सा इंसान हूँ if I have to give it a word I'd say I'm a wreck मेरी जब थेरेपी चल रही थी तो वो भी बड़ा टफ फेस था मेरे लिए तो ठीक था मेरी थेरेपिस्ट के लिए बहुत टफ फेस था बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मैं यार आप रहने दो मैं खुद देख लूंगा I'll deal with it you just don't have to worry that I'm not gonna kill myself or anything वो फेज निकल चुका है मेरी लाइफ का so it's okay I'll be like this all my life but I won't kill myself so don't be scared you're not a failure fucking emotions चलो यार जाने दो मुझे तुझे बात बूत करनी होती है तो मेरे को डिस्कॉर्ड पे टेक्स्ट कर दिया कर that's the only way I can talk to anyone ऐसे नहीं I can't talk to anyone else in any other way sure bye bye good night see you tomorrow hopefully if I stream सो जा इतना कैजुअली बोल रही है तो सो जा I can't sleep यार especially not tonight अभी तो नहीं अभी I'll go I'll have cigarette फिर मेरे को एक बैड ट्रिप आएगी then I'll cry for like an hour or so then I'll get tired then I'll watch something and then I'll sleep और फिर सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा मैं because I have to go to work और फिर पूरे दिन ग्रम्पी रहूंगा और ये बोलता रहूंगा कि नींद नहीं पूरी I'm tired I'm tired I'm tired I'm tired बोलने के लिए बोल रहे हाँ पता है मुझे बोलने के तो मैं भी बोल सकता हूँ तू भी सो जा चल बाय I'm going बहुत हो गया बहुत एक्सटेंड कर लिया तो 3 बाकी लोग देख रहे हैं वो भी बोर हो रहे होंगे हम दोनों की बातें सुन के कल बात करते हैं तूने डिस्कॉर्ड पे टेक्स्ट कर लिया कर कभी वो पता लग गया मेरा पता नहीं मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ बट स्टिल good night thank you everyone for joining and thank you everyone for being on this journey we went from What Remains to Edith Finch so thank you so much and I'll see you guys tomorrow